So finally guys, अभी डालते नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? so finally guys, I got this 146 with Sprocket on my RC 290. It will increase my power acceleration. Oh my God! And it will decrease my this one is from roll on. I didn't get KTM Sprocket, so I go for roll on. और भी इतना सर्च करने के बाद 46 लगा इस ड्यू टू 50, लेकिन RC 90 में लगाने से जो एक्सीलरेशन बढ़ जाता है और टॉप स्पीड बढ़ जाता है। टॉप स्पीड आई डोंट नीड टॉप स्पीड बिकॉज इसका टॉप स्पीड 175 तक है। आई थिंक 10 किलोमीटर जैसा टॉप स्पीड डाउन होगा। That's the look of my RC 290 after opening the multi-cut. It looks sexy. Naughty, naughty. अभी व्हील रहा कि नहीं इतना मजबूत किया था। ये चेंज करना है ना, उस दिन मजबूत कर वो दिया। स्टैंड हल्ला होता है स्टैंड। हाँ वही तो है प्रॉब्लम। तो उस दिन बहुत मजबूत कर सकता है। हाँ मजबूत नहीं होगा ये। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। I'm changing my side stand holder to because of having loose and this one यहाँ पर एक मुंडे वो लूज है इसलिए ये सब चेंज कर रहा हूँ। आप लोग ना वो उसको रख के ना वो नहीं होती जो ये बेस करेंगे ना टेढ़ा मेरा वो भी बढ़ जाएगा। Just like the curve from that. तो बता दिया उसको ऐसा नहीं करना है। ऐसा जो रिंग होता है ना ऐसा वाला वो टेढ़ा मेरा हो जाएगा। वो भी टेढ़े। This is the most common thing you will face every time if you are RC or KTM RC owner. ये जो नट है यहाँ पर ये जो है ये हमेशा ये ढीला हो जाता है, इसकी वजह से ये पूरा सीट चेंज करना पड़ता है। इसलिए रखिए बाइक में बैठना नहीं है। सही पकड़े हैं। पेट्रोल से साफ करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फोकट में कर रहे हैं। मेरा भी आसान होगा। कंट्रोल। मेरा भी आसान होगा। ये पेट्रोल से करने से ना अच्छा होगा ना, जंग नहीं लगेगा इसमें। वो है और वो जितना भी पानी से नहीं निकलता है ना, ये तेल से निकल जाता है ना, ये ग्रीस वगैरह जो है ना। तो क्या नाचो मैं? मेरा सारा पार्ट्स पूरा साफ हो गया। Now you can check it out. This one is like new. Cleaning with petrol. वाह।
testing my sprocket. Testing jari. Fourth gear at the rate of speed of 25-30. It runs smoothly. Third gear. No need to put at second gear. Second gear, third gear डालता था. Third gear. Third gear must to low speed of full. And usually at low speed, at third gear. This is how my Sprocket works. आराम से let's try and big gear big more. Six gear 58 pulling off in hill. Boros and Boronis. If you love like this video, changing sprocket and having a big 250 sprocket with 4060 at the rear sprocket and front 115 feet. Want to increase your mileage and acceleration, you can go for this sprocket. So if you love my Sprocket video, please like, share, subscribe.